नगवालंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में अमेरिका के बोस्टन कॉलेज के छात्र लुकेश वशिष्ठ पिछले 3 महीने से अंग्रेजी, योगा, हिंदी, कंप्यूटर, असेंबलिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड करियर काउंसलिंग की कक्षाएं संचालित कर रहे थे। विद्यालय द्वारा आयोजित विदाई समारोह में पत्रकारों से अपने अनुभव साझा करते हुए लुकेश वशिष्ठ ने बताया कि भारतीय छात्रों में सीखने की अद्भुत ललक और अपार ऊर्जा है, बस उनको सही दिशा निर्देशन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैंने भी यहाँ के छात्रों और शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा। भारत और भारत में काशी की बात ही अनोखी है। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने भी अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य काशी के छात्रों को अमेरिकी छात्रों से और अमेरिकी छात्रों को काशी के छात्रों से जोड़ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक बनाना है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य पी मधु, शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत, उप प्रधानाचार्य कृष्णा अवतार आदि उपस्थित रहे। मास्टर लुकेश वशिष्ठ मिश्र, he is a resident of United States of America, has been working in our school as an internship trainee since July 25th. He worked in different areas. One is computer assembling. It is very useful and our students participated actively, and now it became an activity in our school. Hereafter all other students also will try to assemble the computer in a working condition. And he also participated in English spoken classes, yoga classes, and art and craft digital, Hindi spoken classes and career counseling session. हमने यहाँ पे कंप्यूटर बनाना सीखा। हमने यहाँ पे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को कैसे असेंबल किया जाए, हमने वो देखा। हमने ये जो चीज़ें सीखी हैं वो पहली बार सीखी हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हमें पता चला कि कैसे क्या चीज़ कहाँ लगानी है, क्या करनी है। अगर अभी भी हमें कोई कंप्यूटर का कोई कैबिनेट खोल के दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि हम कहाँ पे कौन सा पार्ट है, कहाँ पे क्या पार्ट लगाना है, क्या नहीं लगाना है। और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि कभी अगर हमारा कंप्यूटर भी ख़राब हो तो हम कर सकते हैं अपने से ठीक, हमें कोई किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। I wanted to start a project, and that project was make a computer that the school of IHS can use for their graphics department. The inspiration was I wanted to create a project that I could have students engage in, and we could really work together and create something that I can leave here when I go back home and be proud of. So we created a computer, and like I said, it's for the graphics design department. But while I was doing it, I got to meet so many wonderful kids here, right? And I got to learn more about them. So that was a very fun aspect of this project. But more so on the project, we had to do some research on parts first. So we had to figure out, okay, we're gonna build a 3D modeling computer, this will require a very powerful graphic card known as NVIDIA RTX cards. So we had to choose a model which we liked. We ended up going with the 3060 option, which was both cheap but also powerful enough to do what we wanted it to do. So after we got that, we had to find parts to build around that base model or that main component. So we chose a motherboard which was compatible, and we had to find a CPU. Now we can either choose between Intel or AMD. I chose AMD Series 5000 CPU, which was a little difficult to find here in India, but we successfully managed to find one. After that, everything else was just fit and play, plug and play. So we found an SSD, specifically an NVMe SSD that we fitted onto our motherboard. We found 16 gigabytes of RAM, and we have around a terabyte of storage on it. We also found a 500 gigabyte power supply, and we put it all together, and it works wonderfully now. That's it.